हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 21 मैटर, क्लास 4 ईवीएस। मैटर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ओके, तो बात करते हैं। कीप अ स्टोन वाटर एंड रेटेड ड्रिंक इन द डिफरेंट ग्लासेस, ऑब्जर्व them carefully and write any three characteristics of each. Everything around us is made of molecules that occupy space. Everything that has a mass and occupies space is known as a matter. Mass is a measure of how much there is of an object. Air, water, rocks, plants and metals are all example of matters. आप देख सकते हो, एयर, वाटर, रॉक्स, प्लांट्स एंड मेटल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैटर. डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, मैटर कैन एग्जिट इन their three main states: solid, liquid and gas. Each of these states is also known as a phase. A phase describes the physical states of matter. The phase of state of matter can change when the temperature changes. Generally, as the temperature rises, matter moves to active state. Since energy is added, matter changes state through freezing, melting, evaporation and condensation. Solid, liquid, gas. Arrangement of molecules. Characteristic of गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड. आप देख सकते हो, सॉलिड में जो सॉलिड चीज़ें होती है, मतलब कि ठोस, जैसे आइस है. और लिक्विड में जैसे हम देख सकते हैं कि वाटर है. गैस में हम देख सकते हैं जैसे स्टीम किया हुआ, जो स्टीम होती है, बॉयल वाटर है, उसमें से जो स्टीम निकलती है वो गैसेस. ओके, द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैकेड यूजली इन अ रेगुलर पैटर्न. द मॉलिक्यूल लिक्विड, द molecules are called close together with no spatial arrangement, and gas, that molecules are separated with no regular arrangement, retains a fixed value and shape independent of the container, take the shape of the part of container that it occupies, take the space and volume of its containers. Okay, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा. अब हमारा नेक्स्ट है सॉलिड. देयर इज़ अ वेरी लिटल फ्री स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. देयर आर वेरी डिफ़िकल्ट टू compress liquid. Not too much free space between the molecules. They cannot be composed easily. Plenty of the free space between the molecules. They can be composites. They are very rigid. Their molecules cannot move or slide past one another. That is, they do not flow easily. Their molecules can move or slide past one another. Liquid can flow easily. Their molecules can move past one another and occupy the entire space available to them. The change in matter from one physical state to another is called a physical change. During this change, the compositions of a substance does not change. No matter what phase or physical state water is in, it will always be water. This means that water vapor of changing to water and then freezing to the ice are बोथ फिज़िकल चेंज. आप देख सकते हो कि वाटर को हम वेपोर में भी चेंज कर सकते हैं और फ्रीजिंग करके उसकी आइस भी बना सकते हैं. इसे फिज़िकल चेंज कहते हैं. चेंज ऑफ स्टेट्स टेक इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड सच एज वाटर, मिल्क, एप्पल जूस, टी एंड शुगर सिरप. Observe how long it will take for these liquids to freezing, solid, melting, freezing and liquid. आप देख सकते हो evaporation and condensation. Gas, matter can change from one physical state to another. The change of state start freezing. The change of state from liquid to gas on heating is vaporization.
वेपराइजेशन का मतलब ये होता है जो हम पानी जैसे हम गर्म कर रहे हैं तो उसमें से जो स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, उसे वेपराइजेशन कहते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज नो एज कंसिडेशंस method. Mix a small quantity of each of the solid with water. Observe what happens and complete the chart for sand, flour and plaster of Paris, बेकिंग पाउडर, पाउडर ऑफ पेंट एंड साल्ट। ये यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो सॉलिड टू वाटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एंड स्मॉल quantity of each this solid and with water. Observe the happens, complete the chart. Okay, observations. Delivers in water, does not dissolve in water. There appears to be different sort of change. Method B. You might try some other mixes. Use gloves, cement and water, lemon juice and washing soda, vinegar and bicarbonate soda. Observations. When a change can be undone, freezing liquid water to ice and melting it back again, it is known as a reversible change. The change in which we cannot get back the original substance are called irreversible change. When we burn paper, we cannot get back the paper from ash, so it is an irreversible change. The change where the chemical compositions of the substance completely change are known as chemical change. For examples, the composition of ash is very different from paper. It is an entirely new substance. Where was during physical change, only the physical state of matter change. No new substance are formed. Soluble and insoluble sentence. Prepare lemonade with lemon juice, sugar, salt and water. Add some ice and share with your friends. आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है soluble and insoluble substance. When आप एक लेमन जूस में शुगर एंड सॉल्ट एंड वाटर ऐड करके, आइस ऐड करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. व्हेन वी प्रिपेयर लेमनेड एंड द सॉल्ट completely dissolves in water, substance which dissolve completely in another substance are called soluble substance. Substance which do not dissolve in water and call it insoluble substance. Salt is soluble in water and sand insoluble in water. आप देख सकते हो soluble में कौन सा आता है, आप देख सकते हो साल्ट है soluble है और सैंड यानी कि मिट्टी है वो insoluble है. नेम टू अदर सब्सटेंस विच आर insoluble in water. The substance which dissolves is called solute. The substance in which it